हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। दिस जो क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ऐसा इस सेट में कुछ ऐसा R3 का मेंबर होगा जिसको हम लोग इस कलम वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो डायगोनलाइजेबल होगा एंड नॉर्म ऑफ W 1 होगा। सो पहले इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम चूजिंग अ W बिलोंग्स टू S where W equal to W1, W2, W3. Okay, so now as W belongs to S, I can say that 1 minus 3 2 into W means W1, W2, W3 is a diagonalizable, right? So अगर हम लोग इस कलम वेक्टर को इस रो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और अदरवाइज इन अदर वर्ड आई कैन से दैट इस कलम मैट्रिक्स को इस रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, W1, W2, W3 minus 3W1 minus 3W2 minus 3W3 2W1 2W2 2W3. So this is a 3 by 3 order matrix. 3 by 3 order matrix. I am considering this matrix as to be A. Now, and with the condition that norm of W is equal to 1. Now, norm of W is equal to 1, that is representing W not equal to 0, 0, 0, right? W not equal to 0, 0, 0. Now, the point is that this matrix A is diagonalizable. चलो देखते हैं this matrix A कब diagonalizable होगा. So पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स A के लिए. फॉर मैट्रिक्स A हम लोग देख सकते हैं कि A जो मैट्रिक्स है, this column and this column are actually same, just W into this column, W1 into this column, W2 into this column, W3 into this column. So in other word, I can say that A has only one linearly independent row, right? A independent column. It has only one linearly independent column. So therefore, A जो मैट्रिक्स होगा इसका रो रैंक जो होगा वो मैक्सिमम 1 होगा और मैट्रिक्स का रैंक रो रैंक से हमेशा छोटा होता है. सो इससे हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स का रैंक एग्जैक्टली 1 होगा. ठीक है. नाउ पॉइंट इज दैट एज मैट्रिक्स ए इज 1, सो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, जो डेट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0. नाउ हमें क्या पता है, फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, then date of A is equal to 0 if and only if 0 is an eigenvalue of A. ठीक है ना. सो डेट ऑफ ए 0 होगा तो सो ये जो मैट्रिक्स है उसका 0 एक आइगन वैल्यू होगा ना. नेक्स्ट, फॉर आई एम जस्ट राइटिंग अ डेफिनेशन, तुम लोगों को पता ही होगा, फॉर एनी आइगन वैल्यू lambda nullity of A minus lambda I is called geometric multiplicity of lambda, right? पता ही होगा. Or I am going to use another theory that any matrix is definitely a square matrix is diagonalizable if and only if algebraic multiplicity of
eigenvalue equal to geometric multiplicity of eigenvalue, राइट। हर आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। नाउ पॉइंट इज दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं नलिटी ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू 2। सो हम लोग बोल सकते हैं व्हिच इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस 0 आई, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर geometric multiplicity of the eigenvalue geometric multiplicity of the eigenvalue is 2. Now point is that as geometric multiplicity of the eigenvalue is 2, so as this matrix is diagonalizable, so हम लोग इससे बोल सकते हैं therefore algebraic multiplicity of the eigenvalue 0 is also 2. Now as this is a 3 cross 3 matrix, so इसका 3 आइगन वैल्यू होगा, 2 आइगन वैल्यू अगर 0 होगा तो एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगा, राइट। सो लेट लैम्डा बी द नॉन जीरो आइगन वैल्यू, राइट। Now note that for a n cross n matrix A with rank of A is n minus is rank of A is 1, it has one non-zero eigenvalue if and only if trace of A is non-zero, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रैंक ऑफ ए अगर 1 होगा तो मैट्रिक्स का एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा इफ एंड ओनली मैट्रिक्स का ट्रेस नॉन जीरो होगा। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स ए therefore the matrix A is diagonalizable if and only if trace of A which is equal to W1 minus 3W2 W1 minus 3W2 plus 2W3, I guess 2W3 is non-zero. So therefore S is equal to all such W1 W2 W3 belongs to R3 such that norm of this, if we consider this as W, norm of W is equal to 1 and W1 minus 3W2 plus 2W3, this is non-zero. Now they are asking whether this S is compact or connected. So first let's talk about its connectedness. Now note that if we write a function let phi such that R3 to R defined by phi of x y z, this is equal to x minus 2y x minus 3y plus 2z is a continuous map, right? As this is a polynomial function, so it's always continuous. Now as this is a continuous map, we know that then what I can say, then all such x y z belongs to R3 such that phi of x y z is greater than 0 is an open set in
R3. Why? As this set can be written as phi inverse 0 to infinity, right? Phi inverse 0 to infinity. This is an open set. Again, in the same way, I can say that all such x, y, z belongs to R3 such that phi of x, y, z is less than 0, which is equal to phi inverse minus infinity 0 is also open in R3. Now, note that this S can be written as is equal to all such W1, all such W1, W2, W3 such that norm of this is equal to W, norm of W is equal to 1, and uh, W1 minus 3W2 plus 2W3 is greater than 0. Union all such W1, W2, W3, W belongs to R3 such that norm of W1, norm of W equal to 1 and W1 minus 2W2, W1 minus 3W2 plus 2W3 is less than 0. These are two disjoint open set in S. This is a set in open set in S. This is a open set in S, and these two open sets are disjoint in S. So S can be written as disjoint union of two open sets. Therefore, S is not connected. Although, and by Heine-Borel theorem, we know that any subset S of Rn is compact if and only if it is closed and bounded. Is compact if and only if it is closed and bounded, right? Now we know that this kind of set is not closed as any point lying any point W is satisfying norm of W is equal to 1 and W1 minus 3W2 plus 2W3 is equal to 0 is the limit point of this kind of sets. So hence my conclusion is S is neither compact nor connected, which is our option B. So option B is our correct option. Thank you.